Now today, let's start with chapter number 9, air around us. In this chapter, we will study about air. Air is present everywhere. We cannot touch it, we cannot see it, but we can feel it. हम उसे क्या करते हैं? Feel. Now, in this chapter, I will tell you about air around us. Air, what it do? It occupies space. If you fill a balloon, वो क्या करते हो? Balloon की space shape ले लेती है और तो उसमें क्या हो जाती है? Fill हो जाती है. Air has a weight. You take a football, one with air filled and one inflated one. Which will be heavier? The football, which will have air. An inflated one will be light. So, इससे क्या पता चलता है कि एयर के पास क्या है? वेट. नाउ एयर हेल्प्स इन बर्निंग. देखो, आप कभी भी जब हम बर्न करते हैं, बॉनफायर करते हैं, तो हम फूंक मारते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? जल्दी से बर्न होता है. विंड एंड एयर हैज अदर यूज. और भी उसके कुछ यूजेस है. नाउ mention any 4 uses of air. You have to mention the 4 uses of air. I will tell you further in the chapter. You will understand yourself. Now let's start with the chapter. Now air around us. Air is all around us, but we cannot see it. We can only feel the air. हम उसे खाली फील कर सकते हैं when it's moves. जब वो क्या करती है? मूव करती है. All living things need air. भाई हर एक living things को air की नीड पड़ती है. क्यों पड़ती है? Breathe करने के लिए, सांस लेने के लिए. Like we are not able to survive without air. If there will be no air, we will not be able to survive. Now animals living under the water also need air too. जो एनिमल्स पानी के नीचे मतलब पानी में रहते हैं, they also need air to breathe. Like fish, how they breathe? They breathe through their gills. वो अपने गिल्स से ब्रीथ करते हैं. Now they breathe in air present in water. ये क्या करते हैं? जो एयर इनके वाटर में प्रेजेंट होती है, उसको क्या करते हैं? ब्रीथ. Now you should not be able to blow your birthday candle if there is no air. देखो, हम फूंक मारते हैं, जब तो कैंडल क्या हो जाती है? बंद हो जाती है. If there will be no air, the candle will not lit. Next, why are not we able to survive without air? Because हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए. That is why air is very important to live. Next is air has following quality. Let's study about some quality. First is air occupies space. Air क्या करती है? Space occupy करती है. Bring a balloon. आपको balloon लेना है और a tire tube. Blow air onto it. You will see that it's grow bigger and bigger. आपको दिखाई देगा कि वो जो balloon है, जितनी आप उसमें air fill करोगे, वो उतना बड़ा होता जाएगा. ठीक है? Why? It is because air goes into it and makes it in big size. Hence, we can see that air occupies space. और हमें क्या पता चलता है कि air क्या occupy करती है? Space. Now, air has weight. Now, take another. अब हम balloon लेते हैं another and do not blow air in. इसमें आप air ना डालें. Which of the 2 balloon will be heavier? आपको बताना उस दोनों में से एक में air है, एक में air नहीं है, तो कौन सा heavier होगा? जिसमें air है. Like this shows you that air has a weight. वो क्या बताता है कि एयर के पास क्या होता है? वेट होता है. Now air helps in burning. Air आपको burning में हेल्प करते हैं. If you put a glass jar over a burning candle, it will stop burning. वो stop हो जाएगा burn करना because there is no air inside the glass jar to keep it burning. This shows that air helps in burning. ये क्या शो करता है कि एयर आपको किसमें मदद करती है? बर्निंग. Then we have wind. Fast moving air is known as wind. जो fast moving air होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको wind कहते हैं. Wind helps to move things from their place. Wind किसमें help करती है? चीजों को move करने के लिए. ठीक है? Move करने में help करती है from their place. Next, name 3 things that takes the help of wind to move. You have to tell any 3 things like windmill example. I'm giving you windmill, your air balloon, and birds also need air to move. Now, air has some other uses. What are the other uses of air? Air can be filled into many things and make them useful. It can be useful for various purposes. ठीक है? डिफरेंट पर्पस के यूजफुल है. आप फुटबॉल फिल कर रहे हैं, या अपना स्विमिंग पूल की ट्यूब को फिल कर रहे हैं, या फिर आप साइकिल ट्यूब को फिल कर रहे हैं. देखो, हम बाइसाइकिल चलाते हैं, क्योंकि उसके टायर में हम क्या करते हैं? हवा भरते हैं, एयर भरते हैं, जब तो क्या करती है? अच्छे से चलती है. नाउ द पावर ऑफ विंड इज यूज. देखो, जो पावर ऑफ विंड है उसको हम यूज करते हैं क्या जनरेट करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए.
and they are called turbines. उन्हें क्या बोला जाता है? Turbines. Now, in this chapter, I have told you about air is present all around us, and I have told you the different uses of air and what are its properties, like उसकी qualities क्या है? Air has weight, air occupies space. These are the qualities. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.